नमस्ते बिटिया, खुश रहो बिटिया। I JVN Dr Namrata N, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science of JYOTI VIDYAPEETH Women's University, Jaipur. I had discussed in previous session about eczema. What is eczema? Classification of eczema, etiology of eczema. Now we will discuss about clinical features of eczema and diagnostic, investigations, management. Now, clinical features of eczema depend on stage of disease. Acute eczema and chronic eczema. Acute eczema is characterized by plaque. Plaque is a more than 2 centimeter macule, which is ill-defined. ill-defined मतलब उसकी border well defined नहीं है, regular नहीं है. Erythematous means redness. Edematous with raised, surrounded by papules. Papules मतलब eruptions, means not filled by any fluid. Vesicles means any fluid, fluid fill, which on rupturing give the lesion on oozy look. जब rupture करेंगे तो discharge exudate होगा. Eventually the exudate dry to form crust and scaly as the lesion subside. This condition is acute eczema. Now chronic eczema is characterized by less exudation, means exudation बहुत कम होगा, scaling ज़्यादा होगी, which may be prominent. Lichenification means triad of hyperpigmentation, thickening of skin, increased skin markings, and fissuring in flexural lesions. Fissure means कट लग जाएंगे जहाँ भी flexural area होगा. Now complication of eczema. First one is dermatological complication. Dermatological complication में क्या होगा? Secondary infection होने के chances ज़्यादा रहेंगे, because already infection है, वहाँ से spread होकर दूसरी जगह जाएगा, तो second infection होने के chances ज़्यादा रहेंगे. Next one is एडे इरप्शन. एडे इरप्शन क्या होता है? एडे इरप्शन एक तरीके की रिएक्शन है जिसमें अपीयरेंस होता है पैपिलो वेसिकुलर लीजन्स का ऑन अदर पार्ट्स पे, स्पेशली ट्रंक, पाम, सोल्स, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. कॉन्टैक्ट dermatitis due to unwarranted use of several tropical agents like antibiotics, antifungals, corticosteroids. इसकी वजह से एरिथ्रोडर्मा मतलब extensive eczema, especially when chronic, which generalized to involve the whole body. पहले वो किसी एक localized part पे था, जब complication में convert हुआ तो whole body में हो गया. Next, psychosocial complication. First one, anxiety, depression due to self-esteem, low confidence. Social complications means social stigma, debility. Now differential diagnosis of eczema. First one is psoriasis और eczema कैसे differentiate करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, सोराइसिस में वाइट सिल्वरी स्केल्स दिखेंगे, ठीक है, लीजन्स भी वाइट सिल्वरी स्केल्स जैसे दिखेंगे प्लाक फॉर्म में. ऐसे ही एक्जिमा में स्केलिंग होगी बट वाइट सिल्वरी स्केल कलर के ना प्लाक बनेंगे और ना ही स्केलिंग होगी. फर्स्ट वन इज सोराइसिस में स्केलिंग मोर प्रोमिनेंट है, वो भी वाइट सिल्वर स्केल की, एंड एक्जिमा में लेस प्रोमिनेंट है स्केलिंग. डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ एक्जिमा. थर्ड वन इज ऑस्पिट साइन प्रेजेंट होगा सोराइसिस में
हॉस्पिट्स एंड एब्सेंट होगा एक्जिमा में। नेक्स्ट वन, एक्जिमा जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज़ है। सेकेंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्कैबीज एंड एक्जिमा। स्कैबीज एक इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है, जो कि सरकेप्टर्स स्कैबाई से होता है, ठीक है। और एक्जिमा की वेरियस इटियोलॉजी है। स्कैबीज में स्किन में बरूज बन जाती है बिटवीन द फिंगर्स, ऐसा एक्जिमा में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कैबीज मेनली बच्चों में ज़्यादा दिखता है, एक्जिमा एनी एज ग्रुप। थर्ड वन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन मीन्स फंगल इन्फेक्शन। एक्जिमा फंगल इन्फेक्शन नहीं है। डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन में टीनिया आता है, जिसको लेमन लैंग्वेज में रिंगवॉर्म बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन रहेगा कि ये फंगस की वजह से हो रहा है डर्मेटोफाइटिक, और ये एक्जिमा फंगस से नहीं हो रहा। इसके अलग अलग कॉज है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फीचर एंड अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन टाइप, ठीक है। नाउ डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस। Diagnosis of eczema is done on the basis of physical appearance, clinical examination. A proper analysis of personal history and family history of patient should be done, because various type of eczema originate from family history, and various type of disease originate from family history, ठीक है। एंड पास हिस्ट्री की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक फैमिली हिस्ट्री एंड पास हिस्ट्री इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इन अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन मीन्स इंस्पेक्शन and see morphological appearance of lesions. However, some investigations can be done to rule out other skin conditions and to find out exact cause. So, different type of investigations depend on different type of eczema, like एलर्जिक डर्मेटाइटिस। एलर्जिक डर्मेटाइटिस में इन्वेस्टिगेशंस में क्या हुआ कि जब सीबीसी कराएंगे तो कौन सी रेज मिलेगी, ईएसआर रेज मिलेगी, इओसिनोफिल काउंट रेज मिलेगी, बिकॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वहाँ पे हो रही है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वुड लैम्प एग्जामिनेशन, पैच टेस्ट, फोटो पैच टेस्ट फॉर फोटो डर्मेटाइटिस। Rest will be discussed topic on next lecture. Thank you.